like India. So that's why this intellectual property rights create చేస్తున్న challenges ఎలా ఉన్నాయంటే maybe not easy to address. Maybe a huge powerful organizations has to involve to address the issue created by the intellectual property rights, especially when it comes to the Indian agricultural sector. So I don't want to take the much more time of you. ఇప్పుడు ఈ విషయంతో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ క్రియేట్ చేస్తుందని చెప్పి. అందుకే ఇండియా లాంటి కంట్రీ ఈ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఎంటర్ కావాలి అంటే ఎంత పెద్ద వర్క్ జరగాల్సి ఉన్నది అనేటటువంటిది నా పేపర్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. అండ్ మోర్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మీకు ఒక చిన్న ప్రెజెంటేషన్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. మీకు ఆల్రెడీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఏవైతే అంటున్నారో విచ్ ఆర్ టేకింగ్ బై ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, ఆల్రెడీ ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మిల్క్, పల్సెస్ and second largest producer of the rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruit and cotton. Just to see how much gain we have gained without taking the intellectual property right. ఈ పొజిషన్ లో మనం పెట్టుకొని అండ్ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది స్పైసెస్, ఫిష్, పౌల్ట్రీ అండ్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్. ఇప్పుడు 1995 ఎంటర్ ఏమంటారు, ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేశాము. Now onwards, maybe the intellectuality which are creating by maybe what kind of intellectuality I don't know. ఇప్పుడు మీ ముందు పెట్టారు. ఇప్పుడు నువ్వు బాస్మతి రైస్ కంటే అంతకంటే గొప్పగా నువ్వు క్రియేట్ చేసింది ఏంటి అందులో? లెంత్. మేబీ లెంత్ ఆర్ అరోమా కెన్ డిసైడ్ ద బాస్మతి రైస్. ఇండియా బాస్మతి రైస్ వేదిక్ పీరియడ్ లోన బాస్మతి రైస్ మీరు ఒక మేబీ ఏం యాడ్ చేశారని చెప్పి అక్కడ. ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ద కంపెనీ. మేబీ దర్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ ఇస్ గుడ్, maybe their efforts are good, maybe their technological advancement is good, but whom they are challenging? ఆ ఛాలెంజ్ ఎవరికి మీరు ఇస్తున్నారు అనేది ఆ పుట్టికే జరిగింది ఇక్కడ. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఛాలెంజ్ ఇచ్చినప్పుడు మరి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏముంటున్నది అంటే ఆల్రెడీ అవర్ ఇంటెలెక్చువల్ సెట్ దట్ ఇండియాస్ నాలెడ్జ్ అనేది ఏమంటున్నారు, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద గాడ్, నాట్ బై ఎనీ పర్సన్ అని అనుకుంటున్నారు. మరి అలాంటి కంట్రీలో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ బీయింగ్ ఇండియన్ ఆర్ ఎల్స్ ద మేబీ ద అంటే ఒక డెవలపింగ్ కంట్రీ అవుతున్న దాంట్లో ఛాలెంజెస్ చూస్తున్న మనకు డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రివ్యూడ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అడ్రెస్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్. ఫర్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేయలేదు అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ డన్ సో మెనీ. ఇన్ ద ఇయర్ 2016 it has realized that and it has created the national platform to protect the India's maybe intellectual property rights, but it is not enough. అవేమి దానికి పెద్దగా మ్యాచ్ అవుతున్నట్టు అయితే ఏమీ లేవు. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడే టర్మరిక్ మీద ఎట్లా పట్టుకొస్తారు వెళ్ళి, అసలు ఎవరు చెప్పగలరు? నీమ్ ట్రీ మీద ఎట్లా చెప్పగలము? చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి మా చెట్టు కూడా చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక నుంచి మీ నీమ్ ట్రీ అనేది మా దగ్గర కూడా ఉంటుంది అంటే అయిపోయిందా? మేబీ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద నీమ్ ట్రీ. ఈ పేటెంట్ రైట్ ఇచ్చింది ఎవరు? ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చింది. మరి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ విచ్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై ద సో అండ్ సో ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద పర్సన్ ఇక నుంచి మాది అంటున్నారు అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటింగ్ ద సో మెనీ ఛాలెంజెస్. హౌ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ both the sides. One is the positive aspects, another one is the negative aspects. But already who have a platform, they are getting more benefits when compared to the country like India, because the Indiaలో ఉన్నటువంటి facilities కానీ platforms కానీ maybe I think that they are not that much developed to protect ourselves. This belongs to the India. Anyhow, thank you for giving this opportunity. Thank you. The patent rights given for the turmeric or tulsi, they were all declined by Indian Council for Scientific Research. They were all declined. So we don't have that the right to claim the patents for turmeric or tulsi, neem and all. Because they were declined by Indian Council for Scientific Research. Extending this, ఈ కేసు 1998 లో అమెరికన్ కోర్టులో ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నది. ఇప్పుడు కూడా ఆ కోర్టులో ఇంకా ఫైనలైజ్ చేయలేవు. దీన్ని బట్టి మన I think 1997 they were all declined by. Yes madam, definitely I accept your words. మనము టోటల్ గా అపోజ్ చేశాము, బట్ వరల్డ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ వాట్ నా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను, so that property belongs to mine అనుకుంటూ వస్తుంది. So anyhow, it is a great challenge to us to face the intellectual property rights. Thank you. Thank you madam. Thank you madam. Thank you for it. Thank you.
Dr. Karim. It's really what you've spoken is of utmost importance, and especially for developing country like India. So recently we had also we had come to see in some places where in UK or US they were selling the charpai, the bed which is made of jute and all, which is so common in our villages and our houses, but they are claiming it to be theirs. So just because we are not aware that we have to claim certain things, it is ours from ages, just like as Madam said, turmeric, neem, all those things. From our forefathers, we have been listening that for everything we were having turmeric, drinking, eating turmeric, applying turmeric, and now someone else is claiming. So just we are not claimed. So a lot of awareness is needed for all such things because of our being, we are still a developing young country. So yeah, definitely it's a good thought and yes, nice paper. Thank you. So now we have Dr. P. Satyanarayana from Government Degree College, Begumpet, telling us about intellectual property rights, issues and challenges. So there's a just request from the organizers that since there are a lot of presenters and we are running short of time, kindly try to conclude within 5 minutes. It will be helpful. Thank you. Good evening. Good evening, dignitaries of Dayas and of Dayas, and my dear students and colleagues. I am Dr. Satyanarayana from Digital Begumpet. My paper is same as whatever is on the our seminar title. And this, most of the points, whatever I am going to discuss, all this covered by the previous speakers, but I am briefing my paper, student point of view. What is the relevance of this topic, present context? How it is related to our subject, especially the degree students, economic subject and commerce students. Now recently we have celebrated 75 years of India's independence. Now we are in the Amrit Kaal. In this context, we are always calling our economy as developing economy. In 75 years, we are calling our economy developing countries. When it becomes developed country, we will lead our country to developed country. And what contribution make our economy to developed country? Is it possible 100 year of independence we call our nation as developed economy, developed country? What contribution needed? We will lead our country to developed country. Whom and which generation? I mean you people, your hands. It is our future in your hands, future generation, young people, young India. Young India will achieve develop our country as developed country through knowledge-based economy. That's why in NEP also may give more importance to knowledge, ancient knowledge. So much of the ancient knowledge is destroyed. Nalanda, Takshashila universities, we have lost so much of ancient knowledge. And now we are giving to so many things we did not know that. So many is not propagating as well. Now we are giving importance to whatever knowledge is undercovered. We unearthing that.
Now, here I discussed about how it is relevant to our subject. In economics, Adam Smith is the father of modern economics. He gave a division of labor, two concepts: division of labor, specialization. The division of labor, specialization. Why we needed trade? Already, sir, there is a previous speaker in the morning session, the Srinivasa sir. Because of business, because of trade, we needed to larger operation scale. We produce more for trade, for international business. We produce more. We increase our output. In order to increase output, we specialize in that product. This specialization gives birth to new inventions, new methods, new technology. I mean, when we invent new things, we must have some protection. Otherwise, some people copy it. Original will be, it lost somewhere. Original work will last somewhere, and copies, pirated works is emerged as more than original work, original source. Okay? My point is, the international trade, because of international trade, these intellectual property, these specialization, invention, innovation, new technology, it is where search for new technologies for increasing output. Okay, it leads to inventions, new technology, new methods. Means we need some protection. That's why in LPG policy, we have opened our economy in 1991, economic reforms, globalization, we adopted a globalization, open economy to the world. In this context, we increase our production. And second thing is, in 1995, WTO and the TRIPS, they included that. In future, this intellectual property rights, this number of patents, as an indicator of economic growth. Maybe it is indicator of economic growth. Those who are having more patent rights, more patents, that can, it is one of the, it may become one of the economic indicators, growth indicators. Okay? And this is the intellectual property, legal rights, inventors, who are the creator inventor for certain period of time. Why it is needed? It is incentive. It is incentive to those who are brainstorming, those who are created, those who are invested to invent that thing. It is like the incentive. And his right must be protected. After some time, it will be open to all. But for some time, he must have monopoly right on his original work. Okay? This is incorporated in the TRIPS by WTO. And in India, there are 7 types of property rights are there. Copyrights, trademarks, patent, geographical indicators, plant varieties, industrial design, semiconductor, circuit lab designs. These 8 types of the patent rights in the India is there. In recipe also, we must have the patent right. If we invented something, adding, in economics, any theory, any science, if adding and subtracting something, we are adding new, create new theory. Adam Smith theory, international economics, something, economics students very well know about it. Adding something new, it is bound to new theory. Is right, and there is new theory. Like that, in adding new thing and subtracting and creating thing, we are also, Indian people are, so many intelligent people are, so you will become the problem. You will become the most number of owners of most number of patents, copyrights. Then only we will achieve the position and status of the developing country.
then in this point of view, we have some problems are there. To achieve the sustainable development in any sector, we need safe and true intellectual property policy needed. I mean, we need protection. We need protection. For this purpose, the government and policy maker think about what type of the protection policy, what type of the how many years. Now in India, 20 years they are granting 20 years, but it may be extended some more time, some more, and 10 more years like that. I mean, 30 years per generation. It is correct. Mean we grant that the property rights for one generation. After that, it open for all. Then it is okay. And in granting those who are having property rights, intellectual property rights, is granting license other to produce large scale, and cost of the price of that product will be lesser in the market. It is available to everyone. The product that is whatever information is there, no product is there, available in the market, every person. He granting license to other people. Then only it will secure. Then only we can achieve the sustainable development in our economy. Okay? I congratulate to the seminar organization and principal man and organizing committee giving this opportunity. Thank you one and all. Now, requesting Dr. H. Rajesh Kumar, BJR BBC Narayanguda to present his paper briefly. First of all, good afternoon to all of you. My name is Dr. राजेश कुमार और मैं अपना पेपर हिंदी में प्रेजेंट करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर प्रदान किया गया, सबसे पहले मैं अपने कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस से जुड़े सभी अधिकारी और इस कॉलेज की प्राचार्य और इस कॉलेज कार्यक्रम से जुड़े सभी विद्वानगण और इस मंच पर आसीन विद्वानगण और सभागार में उपस्थित सभी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, सबको आशीर्वाद पाना चाहूँगा मैं। और मेरी बात यही है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली इंटेलेक्चुअल है क्या? पहली बात यह देखना बहुत जरूरी है। भाई एवरीवन हैव देयर ओन हिडन टैलेंट, एवरीवन इज यूनिक इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई क्षमता नहीं होती, सबके पास क्षमता होती है, बस समय का इंतजार होता है। और अभी मैं छूट जा रहा हूं, जो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी इस कार्यक्रम की ओर से मुझे कहने का जो मौका दिया गया उनको भी बधाई देना चाहता हूं। तो जहां पर बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बार बार प्रॉपर्टी अगर यदि हमारे पास कार है, बंगला है, मकान है, पेन है, मोबाइल है, या जो कुछ चीजें वो हमारी प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, और वो प्रॉपर्टी मार्केट में हम ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हमारा हक बनता है। परंतु जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है मनुष्य की बुद्धि की सोच और उसकी रचनात्मक, उसकी क्रियात्मक उसके परिणाम का सफल फल होता है। और जब देखेंगे कि जैसे हम बैठे हुए हैं, अगर each and every idea is own essence, इसके लिए कहा गया an idea can change your life। जब अगर आइडिया से अगर हमारी लाइफ बदल सकती है, तो फिर हमारी जिंदगी में और कुछ क्या नहीं हो सकता है। और तो हमारा एक आइडिया जो है दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। और जैसे हम बात करेंगे, जैसे इस प्रकार जो बौद्धिक संपदा जिसको कहते हैं, ये इंटेलेक्चुअल जो राइट्स है, ये उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स है, वो किसकी राइट्स क्यों बने, वो राइट्स के द्वारा किसकी रक्षा होती है, कैसी रक्षा होती है, किसके लिए रक्षा होती है, और उस रक्षा से किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। ये बात बड़ी गौर करने वाली बात है। ये तो यहाँ पर हम देखेंगे बौद्धिक संपदा मतलब जो इंटेलेक्चुअलिटी, जिसको हम कहते हैं भाई बुद्धि का विकास, बुद्धि का क्रम, बुद्धि की सोच, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न जो क्रियाकलाप है ये। तो जो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत उन सभी विचारों को,
उन सभी विचारों का मतलब हर एक के अपने अपने व्यूज और हर एक के अपने व्यवहार, वे ऑफ वर्किंग, हर एक का अपना अपना स्टाइल अलग होता है। वे ऑफ वर्किंग, उसका विचारों, ज्ञान, और आप देखेंगे कि हर आदमी के ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है। समय आने पर स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, जब मौका आता है तो लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर देते हैं और वो दुनिया में ताली बजवाने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं। वाह वाह। तो जहां पर हम देखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत उन सभी विचारों, व्यवहार, ज्ञान, गोपनीय जानकारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है जिसको कभी लीक करना नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ये, उनके कुछ काम इतने गोपनीय होते हैं, इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि उनको किसी प्रकार का कोई पेटेंट या कॉपीराइट के ऊपर में अनुमति नहीं दी जाती है। गोपनीय जानकारी इत्यादि का संरक्षण प्रयास किया जाता है। जो वाणिज्य मतलब क्या बिजनेस सेक्टर, आप देखेंगे इतना बड़ा बिजनेस सेक्टर है आज दुनिया में, भाई कौन सी वस्तु कब, कौन, कहां, किधर, कैसा, किस रूप में बना रहा है, ये इसका पता लगाना मुश्किल है। जो वाणिज्य तौर पर मूल्यवान होते हैं, व्यक्तियों के दिमागी उत्पाद से अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। अब बौद्धिक संपदा जो अधिकार है इसमें क्या क्या आ सकता है, देखिए आप अगर जैसे आप कोई रचना लिखते हैं या अगर कोई साहित्य के साथ में जुड़े हुए होते हैं ये, तो साहित्यिक रचना हो, चाहे आपका रिसर्च हो, चाहे आपका इन्वेंशन क्यों ना हो, इन सभी जो विशेषताएं होती है, जब अगर आप मेहनत करके उसको बनाते हैं तो उसके बनाने का जो हक है, जो पहले जो बनाता है उसका हक होना चाहिए। और अक्सर होता है कि बनाते एक हमारे पास इमिटेशन वाली बातें बहुत चलती है ये, और उसी को इमिटेशन को बचाए, इमिटेशन से बनाने और उसको बचाने के लिए कुछ अधिकार बनाए गए। उन सब अधिकारों के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंधित नियमों का यहाँ पर सृजन किया गया, उसका पालन कराया जाता है, लोगों को बचाया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है और इसके लिए समय पर सरकार द्वारा समय पर कई निर्देश लागू किए जाते हैं। अभी जो विषय पर मैं बात करना चाह रहा था, मेरा विषय ये है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भाई करंट ट्रेंड्स इन इमर्जिंग। तो बात देखेंगे यहाँ पर कि बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है ये, उन अधिकारों के अंतर्गत तो करंट इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो करंट में जो ट्रेंड्स आए हैं ये, उन ट्रेंड्स में क्या क्या होने चाह रही है। तो बौद्धिक संपदा के हाल के दिनों में आप देखेंगे जो करंट में बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंतर्गत क्या रुझान आए, क्या बदलाव आए, कहां पर कितना बढ़ा गया, कितना घटा गया है। तो हम इस पर थोड़ा सा बौद्धिक संपदा हाल के दिनों में विभिन्न परिशोधन, कई चेंजेस आते गए इसमें। 21वीं सदी नवाचारों और सृजन की सदी है। देखिए जो 21वीं सेंचुरी मानी जाती है, इसमें कई इन्वेंशंस, कई चीजें सामने आती है। आईपी का उसके लिए कहा जाता है, ये आईपी ग्रंथ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रांति रिवॉल्यूशन कहा गया इसको में। इस युग में सामाजिक भलाई के लिए विचारों और ज्ञान को धन में बदलने की शक्ति है। आईपीआर जो बड़ा अंतर लाया है, जो हाल के दिनों में जरूरी है। विक्टर ह्यूगो जो विद्वान है, उन्होंने क्या कहा, देखिए बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, पृथ्वी पर जब कोई शक्ति उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है, when the time comes no one can stop for the innovative ideas। यहाँ वर्तमान युग प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग चल रहा है ये, और उसके बाद क्या चिकित्सा का युग चल रहा है। मतलब क्या, जिसको हम भाई मेडिसिन के बारे में कहते हैं। रिसेंटली हमने देखा है जो कोरोना आया है, दुनिया हिल गई इससे, दुनिया में बर्बादी तबाही हो गई। कौन सी मेडिसिन कब, कौन, कहां, किधर से ले पता नहीं चला ये, और कौन सी मेडिसिन को कौन सा कॉपीराइट दे, पेटेंट दिए, कौन से कहां से करे पता ही नहीं चला, जिसको जैसा लगा बेचते गए। परंतु फिर भी जान माल की रक्षा, सुरक्षा के लिए प्रयास किए गए। तो यहाँ पर चिकित्सा, निवेश और साहित्यिक कार्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों को ला रखा है। और जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी कई इतने इन्वेंशंस हुए हैं कि जिसकी हम गिनती लगा नहीं सकते विश्व स्तर पर। और यहाँ पर देखेंगे जैसे टेक्नोलॉजी आज सभी सवालों का जवाब है, सिर्फ यहाँ ना केवल विश्व स्तर पर लोगों के साथ संपर्क बनाने में। देखेंगे अब जैसे हम कहते हैं अगली दुनिया मुट्ठी में बात करते हैं, जैसे मोबाइल फोन अगर नहीं रहा तो हम रह नहीं सकते। मोबाइल हो, रोबो हो, जितना भी हो, ये आदमी का जीवन इतना सरल बना दिया गया है कि जिसको हम समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ये करंट इमर्जिंग ट्रेंड्स जिसको कहते हैं, जो समय के साथ जो बदलाव चाहिए वो बदलाव किस रूप में आ रहे हैं ये, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत इसका भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। बल्कि केवल उंगली के नोक पर अनंत जानकारी लिए दरवाजे खोल देता है, लेकिन बड़ी तादाद के साथ जिम्मेदारी आती है। आज कानून में अब ठीक कमी है। कानून सभी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का जवाब, और जब कानून प्रौद्योगिकी के साथ आते हैं तब वहाँ मिलता है जिसे हम कॉपीराइट कानून कहते हैं। अगर आप देखें कि कॉपीराइट की जो बात होती है, जिसको कहा जाता है सरल भाषा में मानवाधिकार,
भाई जिसने लिखा है उसका अधिकार होना चाहिए उस पर। ये अगर जैसे पेटेंट की जो बात आती है, कॉपीराइट की बात आती है, जो भौगोलिक संकेत की बात आती है, ये तो हर वस्तु का, जैसे मैडम ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही उन्होंने, ये आर्टिफिशियल जो है इंसान तो है ही है, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहाँ से काम कर रही है, मतलब हर व्यक्ति के लिए जो भी दिमागी जो उपज है, जो सोच है, उसकी अपनी मूल्य अलग होता है। जैसे हम कॉपीराइट की बात करेंगे तो कॉपीराइट का जो मूल्य उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, उसका एम क्या है, देखिए आप आविष्कारक या कॉपीराइट किए गए कार्य के सामान्य उपयोगकर्ता अधिकार को ठीक करना है। भारत में आप देखेंगे जैसे सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, भारतीय कॉपीराइट एक्ट 57 के तहत संरक्षित है। इस उद्देश्य को कॉपीराइट कानून के विश्व में कई स्तरों पर संशोधित किया गया। जैसे हम बात करेंगे हम जैसे कानून डिजिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, हम लोग आज पूरा मशीन से काम कर रहा है, बैठी जगह पर आपको बटन दबा दीजिए, काम होते चले जाता है। घर में भी देखेंगे, परिवार में देखेंगे, ऑफिस में देखेंगे, जो पहले लोग 100 लोग काम करते थे, आज सिंगल कंप्यूटर करने लगा है, सुपर कंप्यूटर आ गया, ह्यूमन कंप्यूटर कई रूपों में आके चले जा रही है। बुद्धिजीवियों का मतलब अब लगा कि भाई जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल्स, उनको लगा कि हमने जिस मुसीबत से जो काम किया है, ये अगर यदि हमारे काम का परिणाम अगर यदि सही ना निकला तो उसके लिए हम बदनाम होते हैं। इसलिए हमको हमारे काम के प्रति ईमानदारी बरतते हुए अपने काम को सही रूप में, सही समय पर, सही लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा जो जनित जो विचार है, उसको उन्होंने कॉपीराइट के माध्यम से या पेटेंट के माध्यम से जो भी अवसर है, जो अधिकार है, उनको उन्होंने बचाने के लिए प्रयास किया है। तो ऐसे जो लगातार जो ट्रेंड, जो बदलाव आते रहे, बदलाव के साथ व्यक्ति की सोच बदलते चले गए। और आप देखेंगे चेंज इज फॉर डेवलपमेंट, जो चेंज होता है जिसमें बदलाव भी होता है, कभी कुछ कमियां भी होती है, कुछ खामियां भी होती है, कुछ बड़ापन भी होता है, उधार भी होता है। यहाँ किसी अन्य पक्ष को कार्य के प्रति करना रोकता है। जैसे कई बातों में देखेंगे, कई विषयों को लेकर के लाइसेंस भी दिया जाता है, भाई लाइसेंस इज फॉर ओनली पर्सनल, नॉट फॉर अदर्स। अगर आप किसी की कोई वस्तु को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है, भाई दिस इज द कॉपीराइट, दिस इज द ओनर ऑफ दिस कॉपी मे बी रिलेटेड टू सम अदर पर्सन, विदाउट हिज प्रायर परमिशन नो वन कैन यूज दिस वन। तो आप देखेंगे जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, यहाँ पर आपको भौगोलिक सिंबल्स आते हैं, ये इसके अंतर्गत कई बातें आती है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। और जैसे फार्मास्यूटिकल की जो बात कर रहे थे हम आजकल, जैसे फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आप देखेंगे कि आज फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत कई ऐसी मेडिसिन मार्केट में आई है जो कोरोना के समय में पूरा देश दुनिया हिल गई। और कब किसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, पर कौन सी कंपनी ओरिजिनल ऑक्सीजन बना रही, लाइसेंस से बना रही, इसकी जांच को माल को हानि हो रही नहीं हो रही, ये बातें बहुत जरूरी हो गई थी। और इस स्तर पर जो है, विश्व स्तर पर जो है, करंट इमर्जिंग ट्रेंड्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंतर्गत कई विषयों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया, चिंतन किया गया, मंथन किया गया, विचार विनिमय किया गया ये। और जैसे हम बात करेंगे, जैसे दुनिया भर की सरकार ने यहाँ निश्चित कर दिया है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत पंजीकृत का मतलब जो रजिस्टर्ड है, ये पंजीकृत कंपनियों को लाभ और वित्त पोषित किया जाना चाहिए। कई कंपनी ऐसी है जिनको हानि हुई है ये, परंतु उनको भी किसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। और अगर यदि किसी का लाभ होता है, किसी का फायदा होता है, अगर जैसे जान माल की अगर सुरक्षा होती है, उसके लिए किसी को जान नुकसान उठाना पड़ता है, तो उनको भी जो है किसी न किसी प्रकार की सहायता देनी चाहिए। तो आज कंपनियों और स्टार्टअप की बात हम बात कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट भी आज कहती है भाई स्टार्टअप यंग इंडिया, स्किल इंडिया की बात कर रही है। भाई इसमें स्किल इंडिया की बात इसलिए हो रही है भाई हमारे पास इतना स्किल है, हमारे पास जो यंग जनरेशन है ये, उनके पास जितना जो इंटेलिजेंस है, जो उसको बेकार में सेलफोन के माध्यम से समय बर्बाद कर रहे हैं। परंतु हमारे पास अगर यदि यंग जनरेशन अगर यदि हमारा समझ जाए, सुधर जाए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगा दे, तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा देश हो जाएगा कि हम लोग वर्ल्ड में सबसे स्किल्ड पर्सन हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये, उनके जो सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम इंडियंस है ये। क्योंकि हमारे जो इंडियंस है वो बहुत ही बारीकी से सादगी के साथ काम करते हैं, सोच समझ के साथ काम करते हैं। उनको ये मालूम है कि कौन सा काम कब कहाँ किधर कैसा किस रूप में करना चाहिए, वहां पर अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धि बौद्धिक संपदा का प्रयोग करते हैं। और जो बौद्धिक संपदा का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए हमारे इंडिया के कई लोग जो बाहर जाकर के वहां पर काम करते हैं, परंतु यहाँ पर भारत की जो पहचान है वो जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, दुनिया के कोने में जाएंगे, बट दे नोन एज दे आर इंडियंस। तो जैसे हम आगे समय नहीं लूंगा, मैं समय की यहाँ पर बात को ध्यान रखूंगा मैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों का विचार एक विपणन उपरांतर देखेंगे। बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, मार्केटिंग जो इससे जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, ये रिसर्च से जुड़ा हुआ है,
एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा जो शीर्षक भी जो लिया गया है, ये बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दे और चुनौतियां, भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो ये बातें जिस तरह से जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है मैडम, इसके लिए मैं आप सभी को जो आप लोगों ने अपनी भागीदारी की, आप लोगों ने जो अपना कर्तव्य निभाया है और मुझे कहने का जो स्रोत प्रदान किया गया, और जो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उन सबको और आप सबको और अपनी ओर से सबको बधाई देते हुए और आप सबके आशीर्वाद को प्राप्त करने की आशा से मेरे विचारों को विमर्श करने का विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्ते। Actually, our student Nayan is very much interested to present. Just in 1 minute, please give what is your listing and what's your conclusion. Very good afternoon to everybody present here. I am Nayan, studying in BA second year from this college, BJR Government Degree College, and my paper is on the constitutional aspects of intellectual property rights in India. So, as we all know, the intellectual property rights are concerned with the fundamental human intelligence constructs, including the artistic, literary, scientific or technical constructs. They are legal rights granted to an inventor or manufacturer to safeguard their invention or product and make full use of it for a limited time. There is no clear Indian statute that defines the term intellectual property rights. According to the World Intellectual Property Organization, intellectual property is defined as the creations of the mind, such as inventions, artwork, literature, designs, etc., which are used in business. Some of the constitutional aspects of this intellectual property include Article 19, Clause 1, Subclause F, Article 253, Article 300A, etc., which indirectly impose IPR in our country. In addition to these, the Copyright Act of 1957, Patent Act of 1970, and Trademark Act of 1999, etc., also provide some insights into the laws that are related to the intellectual property rights. As a signatory of these trade-related aspects of intellectual property rights treaty, India has introduced some laws which safeguard and regulate the IPR in our country. So, before I leave, I will conclude my paper. So, intellectual property rights are incorporeal and intangible, and they are, as I mentioned, the creation of the mind. They safeguard our right to property, and they are negative rights, which mean that the owner has the right to prevent others from using his or her property, and they symbolize the owner's monopoly in the creation of intellectual property. I believe that in the upcoming years, the constitutionalization of intellectual property rights will be fully realized, and this process will have an effect on the practice of courts and legislatures, particularly in terms of how the existing interpretations of intellectual property rights and principles will be understood. Thank you so much for giving me this opportunity. Really appreciate your enthusiasm to present your paper. Thank you. Sorry we couldn't give you more time. So now we request Dr. Tirupati from City College, Government City College. He is talking about IPR, constitutional aspects. So because of paucity of time, can you limit to 1 minute? Thank you, madam. According to Indian Constitution, there is no direct articles which relates to property right, intellectual property rights, but indirectly the interpretation of the Supreme Court and High Courts, they have extended the origin of the intellectual property rights to not applicability to the some certain articles. This is the in this article I wanted to highlight that point. So and some cases and some of the important intangible knowledge should be covered, like the traditional indigenous people, like the tribal people.
they are being associated with so many things in their peripheral area, but they are unable to claim it as a right. For example, the purified honey they are gathering. Actually, we are in Dabur like this. They are putting label and they are selling that. But the real honey will be taken by the indigenous tribal people. But they are unable to claim it as their right. Because of they don't have the awareness about this kind of things. So there are so much traditional knowledge things they are so far unable to claim under as a their right. There is a intellectual property right. So in these directions there should be some awareness. We should create this awareness to the claim as their intellectual property, especially the indigenous tribal people. Thank you for giving this opportunity. So now we have last presentation from City College, Dr. Jhansi Rani. Yeah, and so she has guided them for this beautiful paper led by Ganesh and Javed. Their role of IPR in fintech industry. Role of IPR in fintech industry. Fintech industry, when we elaborate it, it is financial technology. It is nothing the word which we need to be confused. Yeah, we are guided by Dr. S. Jhansi Rani ma'am, Assistant Professor of Commerce, Government City College. Abstract comes like this. Traditional banks still dominate the financial industry by providing common services like payments, deposits, and credit, but they now face competition from other institutions like digital banks and Novel Idea are gradually taking over as the standard payment method. Customer confidence in the company has been significantly eroded as a result of present financial crisis, which includes rising NPA and the collapse of numerous banks because of fintech industry. The younger generation is more interested in financial services offered by internet giants. Here, according to various research, indicating that at least a portion of customers no longer view physical banking as the default service provider. Physical banking is no longer a default service provider because of fintech technology. Fintech allows firms to manage their financial operations. Fintech is used by different firms to maintain their financial operations in a secretive way, operations and activities effectively. Since fintech is living idea that resulted from creators' intellectual labor, stakeholders' top concern is how to prevent their work from being copied. Several nations have incorporated its shielding in their nations intellectually properties rights. Policies to address this issue, IPR policy is now and the various form country to country. However, in order to provide a thorough analysis, this article will primarily focus on the IPR regulations for fintech industry in India. Thank you. Okay, any students or faculty who want to present? Okay, thank you very much. So it's a time to felicitate our technical session chairpersons. Thank you very much, ma'am. I request our Vice Principal, Dr. Kasturi Suryanarayana sir, and also I request our faculty members who are here to join us on the stage to felicitate Professor Sukrit Giridhar ma'am, Dr. S. Radhika ma'am, Principal of GDC Maheshwaram, ma'am is Associate Professor of Stanley Degree College. Yeah. So I just wanted to extend my heartfelt thanks to Government Babu Jagjeevan Ram Government Degree College for giving us this opportunity to talk about and participate in such a fruitful seminar. We have really enjoyed the whole day and on such a vibrant topic we have taken up. Thank you, a special thanks to the principal, Ms. Dr. Geeta Patnaik and Sri P. Satyanarayan Reddy, Vice Principal and Academic Coordinator,
Dr. K. Suryanarayana, Vice Principal, Organizing Secretary, Dr. Malika, Madam, and a special thanks to the convener, Dr. D. Munnaswamy, sir, who was all the time around for all the things, and he especially come and invited our college for this particular program. On behalf of my principal and all my staff and students, I extend my heartfelt thanks and greetings to your all. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for gracing the occasion. So I request all faculty member, vice principal, sir, ma'am Geeta Shriman Pandarna, sir, please join us. Rajesh, sir, sir, Ravinder, sir, Girdhar, sir, Rajshekar, sir, please join us. Govind, sir. Let us felicitate our principal of GDC Maheshwaram, Dr. S. Radhika, madam, who is a dynamic principal, creating so many wonders in that college, transforming the higher education institution.